Hello students, today's topic is components of physical fitness. Now components of physical fitness. If we study the physical fitness, it goes beyond the strong and living a disease-free life or immune to diseases. Now it is made up of various elements which together establish how healthier we are, how healthier our body is. So basically there are 5 major components of physical fitness which are directly related to each other. Now these 5 major components या जिसको 5 तत्व बोलते हैं जो हमारी फिटनेस एसेस करने के लिए काम आते हैं, they are strength, endurance, speed, flexibility and coordinative abilities. So in this topic we are going to study these 5 major components. Today we are going to study, we'll take up only one component, that is strength. Now strength is the general definition. If we see that strength is how powerful we are or how strong we are, that is the general definition. Strength is technical. If we go technical, the technical definition of strength will be like the strength is the ability of muscles to overcome resistance. Resistance means anything, any weight or any heavy things अगर आप उसको उठाते हो, that is the ability of your muscles to overcome that resistance, that is your strength. Further, it can also be defined as the amount of force that can be exerted, that can be produced by a muscle or a group of muscles against any resistance. ठीक है, रेजिस्टेंस के खिलाफ या रेजिस्टेंस के लिए अगेंस्ट किसी फोर्सफुल movement of the muscles को conduct करना, that is the amount of force that can be exerted by your muscles or a group of muscles against resistance is also your strength. Now it is one of the key factor or key component of physical fitness and the quality or state of being strong and powerful. If you have a proper strength, if you have this component, you are powerful, you are strong. Now strength can be divided into 2 categories. अगर हम स्टडी करना चाहते हैं स्ट्रेंथ को तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. One is called as static strength. The other is dynamic strength. Now this dynamic strength is also further divided into 3 types, that is maximum strength, explosive strength and strength endurance. Next, first, the static strength. Now static strength can be defined as the ability of muscle to act against resistance offered by an immovable object. Static मतलब होता है stationary position. Now stationary position से जो हम force exert कर सकते हैं, that is our static strength. It is also known as isometric strength, जहाँ पर मूवमेंट आपका विजिबल नहीं होता बट देर इज अ टेंशन ऑन योर मसल्स. एग्जाम्पल में जैसे आप प्लैंक करते हो, प्लैंक पोजीशन मीन्स के हाथ के ऊपर पुशअप्स पोजीशंस में सिर्फ आप रहते हो, तो आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड सर्टन स्ट्रेस ऑन योर मसल्स ऑफ योर हैंड्स, ऑन योर लेग्स, ऑन योर कोर मसल्स ऑफ योर बॉडी. तो दैट इज जहाँ पर मूवमेंट आपका कुछ भी नहीं है लेकिन स्टिल द स्ट्रेस ऑन द मसल्स इज देयर. फर्दर, स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन. एक ही जगह से अगर हम रेजिस्टेंस के खिलाफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मसल्स जब फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज स्टैटिक स्ट्रेंथ. It can also be defined as the ability of muscles to hold a position without any movement or to act against any resistance. Now, to measure static strength,
a device called dynamometer is used, and it is measured in dynes. Now, application of this static strength can be seen in weightlifting, plank, then holding the push-ups position, pull-ups position when you are holding the horizontal bar for a prolonged period of time. That is also your static strength example. Then pushing a wall, that is also a static strength example, and many more. Now, dynamic strength. Dynamic strength means it is related with movement of the body, movement of the muscles. It is also known as isotonic strength. Now, it is the strength which is used in the exercise such as lifting weights. जब आप जिम में जाते हो, डंबल्स वेट लिफ्ट करते हो, movement of muscles are there, contraction, expansion of the muscles takes place, squatting, uthak baithak, jumping. So all these things in which the muscles contract, the joints closes and opens up. In short, the movements are clearly visible. Okay, that is known as dynamic strength. Now, this dynamic strength is further divided into three categories, or you can say three types. That is maximum strength, explosive strength, strength endurance. Now, first let us study maximum strength. It is the ability of muscles to overcome resistance of maximum intensity. Maximum intensity, maximum कितना आप रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हो, दैट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ. मैक्सिमम कितना वेट उठा सकते हो, दैट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ. नाउ इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस. कितना मैक्सिमम वेट आप उठा सकते हो, दैट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ. नाउ दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज यूजुअली सीन इन गेम्स वेयर heavy resistance has to be tackled, जैसे वेट लिफ्टिंग है. ठीक है, वेट लिफ्टिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कि कितना वेट आप उठा सकते हो. शॉर्ट पुट में भी आपको इस स्ट्रेंथ का यूज मिल सकता है, कि कितना ज़्यादा ताकत लगा सकते हो ताकि आपका जो शॉट है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाए. डिस्कस थ्रो ऑल्सो द सेम थिंग, हैमर थ्रो एंड जेवलिन थ्रो. Next, moving on to explosive strength. The word explosive means to explode. Now, it is the ability of muscles to overcome resistance with high speed. High speed. So, it is a combination of strength as well as speed. दोनों का combination है. ठीक है. It can also be defined as the amount of force that can be exerted and powerful contraction of muscles. ठीक है, कि from a particular point when you exert a force. So that is explosive strength. It is a combination of strength and speed. It is the ability to perform forceful movement in quickest time. So it is commonly applied in high jump, long jump. Long jump में आप जितना स्पीड से दौड़ के आओगे और फिर जब आप टेक ऑफ लेते हो तो आप स्ट्रेंथ पूरा लगाते हो आपकी बॉडी को टेक ऑफ के लिए, ऊपर फेंकने के लिए. और जो स्पीड आपको मिलता है, जो मोमेंटम आपको मिलता है व्हेन यू रन फास्ट एंड कम क्लोजर टू द लैंडिंग पिट, लॉन्ग जंप पिट, तो वो चीज़ आपका जो है वो आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है. पोल वॉल्ट में देन जो स्टार्टिंग होता है स्प्रिंट का, स्प्रिंट मीन्स द शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, 100 मीटर है, 50 मीटर है, तो उसका जो स्टार्ट होता है, अगर उसमें आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया देन इट इज़ बेनिफिशियल. सो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, अच्छे स्टार्ट के लिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आपके पास चाहिए. सो इन दिस यू हैव टू इमीडिएटली
like an explosion, you have to explode your strength, so that is explosive strength. And the last one is strength endurance. Strength endurance is the ability of muscles to overcome resistance under fatigue conditions. Fatigue conditions कब होगा? जब आप एक एक्टिविटी को लंबे समय तक शुरू रखते हो. So ability of the muscles to overcome resistance as long as possible. कि थकान के बाद भी अगर आप उस एक्टिविटी को सस्टेन करते हो, उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हो, that is your strength endurance. So as the name suggests, it is a combination of both strength and endurance. Endurance means stamina. Now it is commonly used in long distance running, long distance cycling, swimming, marathon, cross country races. ठीक है, जहां पर भी आपको स्टेमिना की जरूरत है वो सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस अप्लाई होता है. So that this is all about strength. So I hope that it is clear to you. Still, if you have any doubt, you can comment your doubt in the group. Thank you.